The most important topic of Civics Class 8th is the Indian Constitution key features. By the beginning of the 20th century, 20वीं सदी की शुरुआत में, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. So जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो कि कई टाइम से चल रहा था, उनका स्ट्रगल चल रहा था कि वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस पा सके, मतलब ब्रिटिश से छुटकारा पा सके, स्वतंत्रता पा सके. During the freedom struggle, the nationalist has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be. So, जब स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम का जब स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का, तो नेशनलिज्म ने अपना बहुत टाइम इसमें दिया. उन्होंने बहुत प्लानिंग करी कि कैसे जब ये इंडिया फ्री हो जाएगा तो हम इसको कैसे रन करेंगे, कैसा लगेगा इंडिया. Under the British, they had been forced to obey the rules that they had very little role in making. So जब ब्रिटिश का शासन था तो उनको वही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो ब्रिटिश सरकार ने दिए थे. तो अपने अकॉर्डिंग उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी. The long experience of authoritarian's rules under the colonial state convinced Indians that free India should be the democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. तो उन्होंने बोला है कि सभी लोग इक्वल है और सभी को पार्टिसिपेट करना है इस गवर्नमेंट में. What remains to be done then was to work out the way in which a democratic government will be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of persons, around 300 people, who became the member of the Constitution Assembly in 1946, who met periodically for the next 3 years to write the Indian Constitution. So इस वजह से एक पर्सन नहीं, बहुत सारे लोग, अराउंड 300 लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बन गए. और फिर 1946 में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए और 3 साल में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. The members of the Constitution Assembly had a huge task before them. The country was made up of several communities who spoke the different languages, belonged to different religions and had the distinct culture. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग थे उनके पास बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन से है, उनके कल्चर्स अलग है, उनका बिहेवियर अलग है. Also, when the constitution was being written, India got throughout the considerable turmoil. The partition of the country into the India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remains undecided about their future, and the social economic condition of the vast mass of the people appeared small. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining the diversity while preserving national unity. The final document also reflects their corner for eradicating poverty through social economic reforms, as well as the emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. Here, the picture of Dr. Ambedkar. Baba Sahib Dr. Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constitution Assembly helped the scheduled caste get more safeguards in the draft constitution. But he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had the reason to fear because the administration of these laws were in the hands of
caste Hindu officers. He therefore urged the scheduled castes to join the government as well as civil services. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in the mind the above mentioned concept of diversity, unity, social economic reforms, and the representative that the authors of the document were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance their concern with the communities to transform the independent India into a strong democratic society. The first feature is federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. ये गवर्नमेंट के एक लेवल से बढ़कर था. In India, we have the government at state levels and at the center. हमारे इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट वो स्टेट लेवल और एक सेंटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट है. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पर पंचायती राज थर्ड टायर है. And you have read about this in class 6 book. We looked at the functioning of the state government in class 7th book and this you will read more about the central government. और इस बुक में हम क्लास 6 में आप लोगों ने राज पंचायती राज के बारे में पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप क्लास 7 में पढ़ा. लेकिन अब इस बुक में क्लास 8 की सिविक्स बुक में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. The vast number of communities in India means that the system of government needed to be divided that did not involve only the people sitting in the capital city of New Delhi and the decisions for everyone. Instead, it is important to have another level of government in the state so that the decisions could be made for the particular area. इसलिए दूसरा लेवल जो कि था स्टेट लेवल वो बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीज़न ले सके. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है वो पूरी कंट्री के लिए अपने डिसीजंस पास करता है और सारी पूरी कंट्रीज को फॉलो अप करती है. While each state in the country enjoy the autonomy in expressing the power on certain issue, subjects of the national concern require that all the states follow the laws of the central government. The Constitution contains the list that details the idea that each tier of the government can make the laws on. In addition, the Constitution also specifies where each tier of the government can get the money from the work that is just. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All the persons in the India are governed by the laws and policies made by each of the three levels of the government. इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. जो लॉज और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डिसाइड करी वो हमको फॉलो अप करनी है. अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी गवर्नमेंट के लेवल में आते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और या तो फिर लोकल लेवल. So, when the Constitutional Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with the evident faith in the common man and the ultimate success of the democratic rule, and in the full belief that the introduction of the democratic government on the basis of the adult suffrage will bring the enlightenment and the promise that will being the standard of the life, the comfort and the decent living of the common man. The second rule is parliamentary form of the government. The different tiers of the government that you will read about the consist of the representatives who are elected by the people. Your class 7 book begins with the study of Kanta, who was standing in a line to vote during an election.
The Constitution of India granted the universal adult suffrage for all the citizens. Constitution ने universal adult suffrage ग्रांट किया है ताकि जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको भी राइट हो कि वो वोट दे सकते हैं. When they were making the constitution, the member of the constitution assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass of the universal adult suffrage, and this would help them encourage a democratic movement and break the clutches of the traditional caste, class, and the gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the election. Thus, representatives are accountable to the people. You will read more about why representative is crucial to the democratic functioning in chapter unit 2 of this book. The next is separation of powers. According to the constitution, there are three organs of the government. पावर्स का सेपरेशन कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया है. दिस आर द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर रिफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लेजिस्लेटर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिफर करता है. द एग्जीक्यूटिव इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. जो एजुकेटिव होता है वो एक बहुत छोटा ग्रुप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और गवर्नमेंट को रन करने में. द जुडिशरी ऑफ व्हिच यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस यूनिट 3 ऑफ दिस बुक. जुडिशरी के बारे में हम चैप्टर यूनिट 3 में पढ़ेंगे इस बुक में. रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन द कंट्री. वैसे इन शॉर्ट में देखेंगे तो ये कोर्ट सिस्टम बताता है हमारी कंट्री का. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट as a check on the other organ of the government, and this ensures the balance of the power between all three. Next is fundamental rights. Fundamental rights यानी basic rights, which is बेसिक राइट्स जो कि सभी लोगों के लिए रहता है कि वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजियंस को फॉलो करता है. ये जो राइट्स वो सभी के लिए इक्वल है. जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, सभी लोग इक्वल है. राइट टू एक्सप्लोजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, दिस ऑल कम इन द फंडामेंटल राइट्स. So the fundamental rights in the Indian Constitution include the right to equality यानी सभी लोग इक्वल है. राइट टू फ्रीडम, सभी लोग फ्री है. जो उनको काम करना वो काम कर सकते हैं. जो उनको प्रोफेशन चूज़ करना वो कर सकते हैं. जो बिजनेस करना वो बिल्कुल फ्री है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन यानी अगर कोई किसी बंदे को फोर्स करता है या अगर कोई पर्सन किसी चिल्ड्रन जो कि 14 साल से छोटा अगर किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उससे काम करवाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल फॉलो होता है. ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हम किसी भी रिलीजन को फॉलो अप कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है कि हम किसी भी कल्चर को फॉलो करें. एजुकेशन जितना हम पढ़ना चाहते हैं हम उतना पढ़ें. एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो दिस अलाउड द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है कि अगर किसी भी सिटीजन्स को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी राइट फंडामेंटल राइट स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, मान नहीं रही है, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है. सो ये हर सिटीज़न के पास राइट है. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सभी के पास है. सो and if you have any query related to any topic of this chapter, then please comment in comment section. Thank you. Have a nice day.